हम देखते हैं जब तक आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ था हमने। 13 नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 13 नहीं रहना चाहिए, 13 इज अ मिस्टेक। ठीक है, 13 इज अ मिस्टेक, वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया तो नहीं रहना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आपको मतलब जितना हो पा रहा था उतना जवाब देना था। ठीक है, क्वेश्चंस। थर्टी सिक्स है, और कौन सा है जरा बताएंगे? आपने भेजा तो है लेकिन मतलब दो चीज हम एक बार नहीं खोल पा रहे। 36 और 45 second bit, I guess. Yes, sir. 45 second bit. You are comfortable with the definitions such as allyl, benzyl, and so on? Yes, Raba. Yes, sir. आपको अलाइल पता है क्या होती है? आपको बेंजाइल पता है क्या होता है? Benzyl पता है sir. अलाइल? No. Why? रिकॉर्डिंग्स कंप्लीटली नहीं देखा आपने अभी तक? Yes, sir. I have to see पहले after क्लास this में, class. हाँ असल में पहले क्लास में, आई मीन द थिंग इज दैट ना कि अगर आपको ध्यान हो, SN1 में हमने बताया था कि बेंजाइल विल बी फास्टेस्ट, है ना? उसके बाद होगा आपके पास 3 डिग्री और अलाइल का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से, ऐसा बताया होगा, राइट? सो अब आपको पता होना चाहिए अलाइल है क्या। हमने तो लिखा दिया अलाइल, राइट? यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अलाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल देखते हैं। व्हाट इज नोन एज अ रेसमिक मिक्सचर? आई होप यू कैन आंसर दिस, राइट? व्हाट इज नोन एज अ रेसमिक मिक्सचर? 45 कैसे भी 2 सेकंड सवाल में आपको दिक्कत है ना? 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स, yeah, C6H5, that means we have a benzene ring, then we have a CH group, then we have Br group, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, and then here we have C6H5, here we have carbon, here we have a Br group, and here rather than CH3, here we have also a benzene ring, right? Sir, I can't see your screen. Oh my bad, sorry, हमने शेयर ही नहीं किया। You're comfortable and you agree with the structures, yes or no, Prabha? Yes, sir. Now please see here. In this structure, if you are going to do SN1, then we will make a carbocation, right?
when you make carbocation, then you will be breaking the CX bond and the carbocation will be made here. Now, the first carbocation has only one benzene group for resonance. In the second case, here we have two benzene group for resonance, and both of these benzene group can take the plus charge, the positive charge, and delocalize it, making it less unstable. That means making it more stable. Okay, less unstable. More stable. So that is why the second one will be more stable carbocation, and that is why the SN1 will be more reactive for the second one. Understood, Prabha? Yes, So, sir. okay. Simply speaking, you know resonance, right? Because of resonance, we were having. Hindi once more. Can I explain in Hindi? Hindi, yes, sir. रेजोनेंस पता है ना आपको? Yes, sir. हाँ, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा. If you remember last class we said that benzyl is stable. Why? Last में हमने कहा था benzyl stable क्यों होता है? Because it shows resonance. कहाँ गया? See here, it is resonance stabilized. Correct? Aisha and Rabah, tell me. Yes, sir. Resonance is Keep your mic on ना. Once you have asked out ना, Rabah, आप mic on करके रखेंगे, ठीक है? Okay, sir. हाँ, अब बताओ. So जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. करेक्ट? Yes. और रेजोनेंस हो किसकी वजह से रहा है? रेजोनेंस हो किसकी वजह से रहा है रबा? Carbon. कार्बन नहीं, Benzyl की वजह से. बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग की वजह से हो रहा है ना. तो रेजोनेंस ज्यादा तो अच्छा, स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटाइन की ज्यादा तो SN1 का रेट ज्यादा. सही है रबा? Yes, sir. और ज्यादा रेजोनेंस तो कार्बोकेटाइन स्टेबल. और रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन की वजह से, ज्यादा बेंजीन तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1. समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है. सिमिलर इज द, ये तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना. इसमें आपको ये कायरल नहीं बताना, ठीक है. Which one undergoes faster SN2 reaction? तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? 1 degree 2 degree. So this is 1 degree and this is 2 degree. So obviously A will be faster for SN2. सही है? Yes, sir. वो चिराल की वजह से I got confused. चिराल है ही नहीं वो. चिराल नहीं है वो. चिराल क्या है वो? चिराल नहीं है, कायरल है, कायरल. कायरल. हम लोग केमिस्ट्री से चिराल प्रोनाउंस करते हैं. नहीं, कायरल. ठीक है? ओके सर. चिराल नाम हो जाता है किसी का. खैर, ठीक है, ये कायरल है, लेकिन कायरल अभी रहने देंगे. कायरल हम लोग आखिरी क्लास में देखेंगे, ठीक है. Predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 reaction. तो यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा ना. See here the first case we have only one benzene ring, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग. बेंजीन को हम पीएच कर दें, फिनाइल से मतलब पीएच, फिनाइल बोलते हैं इसको. दिस ग्रुप इज नोन एज फिनाइल. C6H5 को फिनाइल बोलते हैं. और वो आप ये होता रहेगा सर बेंजीन क्यों, बेंजाइल क्यों नहीं बोलते हैं? बेंजाइल इसको बोलते हैं. अच्छा ये बताइए, बेंजाइल ग्रुप है? इज दिस बेंजाइल? यस सर. नहीं, आप पढ़िए, आप पहला क्लास कीजिए, ठीक है. ओके ये सर. बेंजाइल है, ये बेंजाइल है, ऐसे करके, और उसमें एक कार्बन लगाना चाहिए, अब बेंजाइल हुआ. ठीक है? ओके ओके सर. ओके ठीक सर. है. ये आप कीजिए, फर्स्ट क्लास कीजिए, कुछ प्रैक्टिस वहां पे कराएं हम सवालों का, तभी आपको आएगा, अदरवाइज अभी नहीं आएगा. पीएच हो गया, देन वी हैव CH2. दिस कार्बन इज बेंजाइल कार्बन, देन वी हैव Br. ठीक है. नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है? हियर वी हैव पीएच, हियर वी हैव कार्बन, हियर वी हैव अ CH3, हियर अगेन वी हैव अ पीएच, यहाँ पे आपके पास Br है. ठीक है. और तीसरा क्या है? C6H5, जो CH3 नहीं है, पीएच है, CH है, फिर से एक फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद Br है. चौथे केस में क्या है हमारे पास? C6H5 CH3. ठीक है. पीएच है, CH है, CH3 है, फिर Br है. ठीक है. Now here we have one benzene ring, here we have two benzene ring, here also we have two benzene ring, here we have one benzene ring. ठीक है.
तो सबसे ज्यादा आप देखिए टू जहां पे 2 बेंजीन रिंग होंगे वहां पे कंपटीशन होगा पहले. इन द 2 बेंजीन रिंग हियर वी हैव आल्सो अ CH3 ग्रुप which is going to give electron density when it becomes a carbocation, right? जब कार्बोकेटाइन So बनेगा this तो will go CH3 more भी क्या देगा? faster. हाँ, that is right, it will be more faster. So A, More fast. B, C and D. यहाँ पे First आपके B, पास हाँ B, उसके बाद then C, C, उसके बाद then D, D and then and E. then A. ठीक है. Yes, sir. और कोई था ना शायद, यही बस हो गया ना खत्म. ठीक, चलो. मरियम पारकर और आयशा. आयशा आपकी दोस्त है ना रबा, उनका भी तो एग्जाम होगा. आपका एग्जाम नहीं था क्या रबा? है सर, कल को है ना, तो फिर लेकिन साथ साथ कर लिया कीजिए. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा प्लीज. और टाइम मैनेज करना तो सीख जाइए, 12th क्लास में आ गए हैं. ठीक है, आखिरी घड़ी के लिए सब कुछ मत छोड़ के रखिए. एक कहावत है, क्या है? भोज जानते हैं? भोज, भोज के दिन घिया रोपना. नहीं जानते हैं आयशा? जी. भोज के दिन घिया मत रोपा करो. सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं पता सर. आपको पता है रबा? नहीं. पारकर आपको पता है? जी. भोज के दिन घिया रोपना पता है आपको? नहीं पता है? नहीं सर. नहीं पता है. ये आप आयशा, आयशा इज फ्रॉम बिहार, राइट? यस सर. आप पूछिए घर पे, भोज के दिन सर आज कह रहे थे भोज के दिन घिया रोपना क्या होता है वो. ठीक है, क्या पूछेंगे? भोज के दिन. घिया नहीं जानते हैं? घिया क्या होता है? नहीं. अरे भाई साहब, क्या ही जानते हैं आप लोग फिर तो. चलिए, खैर हटाइए. अब LKG तो है नहीं कि हम आपको सब्जियों के नाम सुनाएं, है ना. LKG में सीखते हैं ना क्या होता है. अनार को क्या बोलते हैं आयशा? क्या? अनार को क्या बोलते हैं? अनार को इंग्लिश में. और इसको शरीफा को क्या बोलते हैं? शरीफा क्या होता है? शरीफा नहीं पता है इनको. इन्ना लिल्लाहि व कस्टर्ड इन्ना एप्पल. इन्ना लिल्लाहि. शरीफा नहीं पता है इनको. सीताफल, सीताफल जानती हैं? सीताफल. नहीं. कस्टर्ड सीताफल नहीं एप्पल. पता. सो के उठी हैं क्या आप आयशा अभी? हाँ, कस्टर्ड एप्पल सही कह रही हैं आप प्रभा. चलिए, यहाँ सुनिए. अब आया टॉपिक एसिड रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स. एसिड रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. किस लिखिए रिएक्शन विथ KCN and AgCN. ठीक है, प्लीज सी राइट हियर केस 1. यहाँ पे KCN की जगह आपके पास आ सकता है NaCN, CSCN, मेनी थिंग, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. लेकिन KCN आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, जनरली सवाल KCN से आया, लेकिन उसके अलावा भी सवाल आ सकते हैं. तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रिएक्शन विथ KCN और NaCN और CSCN. ठीक है, आपको जनरली ये दिखना चाहिए एग्जाम्स के टाइम में. अदरवाइज NaCN और CSCN इत्तेफाक से दे दिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर रिएक्शंस होने जा रही है. बट वी आर गोइंग टू टेक द केस ऑफ KCN ओनली. प्लीज राइट विथ मी. व्हेन अल्काइल हैलाइड्स are treated with alkyl halides are treated with KCN, then they form
alkyl cyanide, also known as aka alkyl nitrile. Please see, here we have Rx plus we have KCN. Now, when we react this, it is going to give me RCN. सर अल्काइल साइनाइड के बाद क्या लिखा है? AKA, also known as plus KX. Look at the mechanism here. What happens actually? यहाँ पे please see. Here we have KCN. Now KCN अगर आपको पता हो, KCN is a ionic compound. That is why it will break into K positive and Cn negative. K positive and Cn negative. Now the structure of Cn negative will be something like this: carbon with 3 bonds with nitrogen, a lone pair on nitrogen atom and a lone pair on carbon atom. Now lone pair on nitrogen atom is it is not very unusual. जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, it has a lone pair electron, but कार्बन भी lone pair electron होने की वजह से कार्बन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. Now negative charge is just a formal charge. It is used to indicate that there is a electron richness in that particular atom. तो कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है, वो आप देखिएगा, और नाइट्रोजन के पास भी क्या है? एक लोन पेयर. Now both of these lone pair can attack on the alkyl group. Here we have Rx. X atom is more electronegative, that is why it will be having delta negative, and the alkyl group will be having a delta positive charge. Now comes our Cn negative. Now Cn negative, it is going to have electron pair on carbon as well as on nitrogen. Now both the attacks can happen. Negative charge is although on the carbon atom, both the attacks can happen. That means carbon can attack on the alkyl group, or what else can happen? Nitrogen can also attack on the alkyl group, because both of them are electron rich. But since carbon, when it attacks on the alkyl group, it is going to form CP bond, and when nitrogen is going to attack on the alkyl group, it is going to form CN bond, and we all know more stable. CC bond catenation property होती है क्योंकि कार्बन की, it is more stable and it is more strong. That is why what happens? This is not favored. The attack of nitrogen's lone pair on the alkyl group is not favored. Rather, most of the product that you are going to get will be by the attack of carbon atom on the alkyl group because of the stronger CC bond. So right here, RCN plus X negative. RCN plus X negative. Understood this? Yes or no? Please tell me. रिएक्शन क्यों ऐसे हो रहा है? नाइट्रोजन क्यों नहीं अटैक कर रहा? समझ में आया सबको? आया ना? जल्दी बताएं. आयशा, मरियम, रबा. Because then it will make CC bond. हाँ, it is going to make CC bond. हाँ, वो हम लिखा देंगे आप लोग को, लिखने की जरूरत नहीं है अभी. समझ में आया या नहीं समझ में आया? Because CC bond is stronger, that is why carbon attacks. Got this? Yes or no? Please tell me. CC bond is more stronger than CN bond. Okay? आयशा, रबा, मरियम. Yes sir. ठीक है, चलिए. हाँ, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे. How many carbons are we having here? Tell me. In the reactant, how many carbons are there? 2. 2. This will be the reaction. Br को replace कर देगा Cn. Right? Now tell me how many carbons am I having in the product? 3. 3. So जब भी now conversions के लिए एक यहाँ पे बहुत important point है. Whenever you have to increase the number of carbon atom by 1. अगर मान लीजिए आपको meth से eth जाना है, eth से prop जाना है, prop से but जाना है. You are understanding my terminology? When I say prop से but जाना है, नहीं समझ में आया किसी को? आयशा, मरियम, रबा.
आया? आया ना? ठीक है. So whenever you have to go from prop to but, met to eth to prop, then you are going to use Casein because it increases the number of carbon atom by 1. ठीक है? So this is important. Here you are having 2 carbons. Here you are having 3 carbons. ठीक है? Now अब यहीं पे लिख लीजिएगा बिल्कुल. Case using Casein increases the number of carbon atom by 1. ठीक है? Now please write with me. Start कर लीजिए लिखना. Since Casein is ionic in nature, Casein है ionic in nature, it dissociates into K positive and Cn negative. K positive and Cn negative ions completely. Cn negative acts as nucleophile in which both carbon and nitrogen have tendency to donate electron pair to the alkyl group. Sir, since second point, Cn minus acts as Nucleophile. okay. Acts as nucleophile in which both carbon and nitrogen have tendency to donate electron pair to the alkyl group. Full stop. But as CC bond is stronger than CN bond, alkyl group is attached by attached नहीं लिखिए, एक सेकंड, अटैक्ड लिख लीजिए, ATTACK कर दीजिए इसको, is attacked by carbon atom of Cn negative. Leading to formation of alkyl cyanide. Let me know once you're done. Done, sir. Both of you done? Yes, sir. No. Yeah, tell me. Are you saying something or you're just saying done? Just saying done. Just saying done. No, the topic was reaction with Casein and then with AgCN. Write the case 2
The second case. Reaction with AgCN. Now, the difference between KCN and AgCN is what? It is AgCN is more of covalent in character. It is right here. AgCN has reaction लिखेंगे पहले. अब लिख लीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा. लिखिए AgCN has more covalent character due to which it does not dissociate into ions. In AgCN, the carbon atom is covalently bonded to Ag. That means silver. Therefore, only nitrogen atom bearing a lone pair electron bearing a lone pair electron is able to attack on the alkyl group of Rx and forms alkyl isocyanides, cyanide or alkyl isonitride. What happens to the reaction? You have Rx plus AgCN has this type of structure. Ag, that is bonded covalently to carbon atom, then 3 bonds as it is with nitrogen atoms. Now, as you can see, only nitrogen is able to attack. बाकी carbon में तो carbon के सारे bond क्या है? They are bonded. It is shared pair. There is no electron richness in the carbon atom, right? That is why what happens? Nitrogen attacks and there is a formation of bond with RNC. Then further, this X negative, it attacks on the Ag and it forms AgX. Now here also, if you have like this, Br plus AgCN, you're going to get NC. Please remember here still the number of carbon atoms is 2. Even though we have one more carbon atom, but it is not in the same chain. The chain is differing because there is a nitrogen atom in between. That is why this is not very useful in any of the conversions. AgBr हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन तो बताएं. Okay, the point like why AgCN is not more useful? Because see here also you can say that here we have 2 carbon atoms. यहाँ पे 3 carbon atom है. बोल सकते हैं ऐसा? है ना? These are 2 carbon atoms और ये तीसरा carbon atom इधर है. Right, Aisha? Prabha, Mariam? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन but this carbon atom is not in the same chain. That is why मतलब इस वजह से ये useful नहीं है. ठीक है? जितना यूजफुल आपका पुराना वाला था. अगर स्ट्रेट चेन वो हम इस वजह से कह रहे हैं ना, कन्वर्जन के सवाल इस तरह के नहीं आते हैं कि आपको एनसी बनाना है. ठीक है, आपको एच, ये आपके पास दिस इज व्हाट नाम अगर लिखें इनका, दिस इज गोइंग टू बी ब्रोमो इथेन. ब्रोमो इथेन ये क्या हो जाएगा बताइए? नाइट्रो इथेन. नाइट्रो नहीं होगा, नाइट्रो के लिए NO2 होता है.
नाइट्राइल। हाँ बोलिए। व्हाट नाइट्राइल? सिर्फ नाइट्राइल नहीं होगा। नाइट्राइल इथेन। इथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइल इथेन नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं, दिस इज इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया, एंड दिस इज आइसोसाइनाइड, दिस विल बी इथाइल आइसोसाइनाइड, बिकॉज कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, but nitrogen is triply bonded to this carbon atom. So this completely act as the functional group also and the parent chain also. ठीक है, रेयर केसेस में ऐसा होता है, this will be ethyl isocyanates. जी डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। 1 सेकंड सर। 1 सेकेंड, oh my god. राइट दिस क्विकली, फिर अगला वाला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डन। देखिए रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन, reaction of haloalkane with AgNO2 and KNO2. लिखिए केस 1, लिखिए केस 1, reaction with KNO2, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, KNO2 is what? It is ionic in nature, that is why it will dissociate into K plus and NO2 negative, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे, you have KNO2, it will dissociate into K plus and NO2 negative. अब ये देखिए NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता कैसे है, सो दिस NO2 इट इज गोइंग टू हैव नाइट्रोजन इन द मिडल एंड दो ऑक्सीजन एटम इसके अगल और बगल में रहेंगे, so you'll have nitrogen atom here like this, then you will have double bond O, and then there will be a single bond O. Now this oxygen atom, it is going to have 3 lone pair electrons, that is why a negative charge, this nitrogen atom will be having a lone pair like this, और इस ऑक्सीजन के पास दो lone pairs हैं. Now obviously you can see that negative charge is on the oxygen atom, that is why it is more able to donate the electron pair also. अगर हम सिर्फ probability की बात करें, अगर हम probability की बात करें, your understanding probability की बात करेंगे तो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है अटैक करने की? टेल मी, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की, राइट? सो है ना, लुकिंग एट द चार्जेस आल्सो, ऑक्सीजन के पास चार्ज भी ज्यादा है and oxygen is also more, that is why both the reason contribute, and what happens, oxygen attacks on the alkyl group. Then the next step, ON, single bond O with a negative charge, it will attack on the alkyl group of haloalkene like this, and then it will lead to the formation of RONO. ठीक है, RONO. Let me give you an example. Here we have CH3, Br plus KNO2. This is going to give you ONO. This is ethyl nitride. Right? Since KNO2 is ionic in nature,
and dissociates into K positive and NO2 negative, K positive and NO2 negative, in which NO2 negative has negative charge on oxygen atom. On oxygen atom. Therefore, the alkyl group is attacked by oxygen atom and forms alkyl nitride. Write the case 2. Case 2, reaction with AgNO2. Reaction with AgNO2. Now, in this case, what is going to happen? The AgNO2, it will be covalent in character. So the oxygen will be bonded to Ag. ठीक है, इसमें लिख लीजिए पहले. See here. Since समझ में आ जाएगा आप लोगों को, AgNO2 is covalent in nature. Its structure is Ag bonded to oxygen, which is further bonded to nitrogen, which is doubly bonded to oxygen atom. So here oxygen double bond, here it has lone pair, and this oxygen also has lone pair electrons. Now, here both oxygen and nitrogen, both of them are capable of donating electron. And if I talk with respect to charges only, then all of these are neutral. Oxygen, nitrogen, and oxygen, all of these are what? All of these are neutral. They are not having any charges. अब बात आएगी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. अब बात आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि अटैक कहां से होगा. एंड एज यू मस्ट नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम. अगर आप लोगों को नहीं पता, नहीं याद पढ़ाया, याद क्या रहा है आप लोग को? नहीं कराया. फोन कल बिहारी इश्तियार है, याद कराया आप लोगों को? आया ना? फोन कर जी. आयशा, रबा, मरियम, Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. फोन के हिसाब से बताइए. वेट अ सेकंड. So what was your question? Sorry, someone was at a gate. I mean, they were just banging. Yes, you are asking something. What was your question? My question was, what is more electronegative? Oxygen, nitrogen. ये याद कराया ना आप लोग को, हमने बताया था ना. फोन कॉल बिहारी इश्क प्यार है. Yes, sir. है ना? So if you remember from there, nitrogen is less electronegative. Oxygen is more electronegative. So oxygen is going to hold on to its electron. It is not going to give the electron. But nitrogen, since it is less electronegative, it is going to give the electron. Because we are now talking about electronegativity. Why? Because we don't have any charges. जब चार्ज की बात आएगी तो भाई जिसके पास भी चार्ज है वो चार्ज अपना देना चाहेगा. ठीक है? चार्ज मींस अनस्टेबिलिटी. Because in the earlier case, oxygen was having a negative charge. That is why we did not talk about electronegativity. We gave priority to the main factor, that is the charge there.
because charge is going to destabilize the oxygen atom. Oxygen atom wants to give the charge away. But now in this case, since all of these atoms are neutral, we are not going to talk about charge. Rather, we are going to talk about electronegativity. That is the tendency to hold electron. So tendency to hold electron is greater for oxygen atom. That is why it is going to hold the electrons and not give any. Nitrogen atom, since it is less electronegative, it is going to give the electrons and form a bond with carbon atom. बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? अरे इतनी लंबी तकरीर की फिर भी समझ में नहीं आया आप लोगों को? मरियम, आयशा, रबा, जी आया समझ में? आयशा एंड रबा, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया सर। आया ना? ठीक है, चलिए। नाउ जी कोई कुछ पूछ रहा है क्या? yes sir can you explain again इतना लंबा तकरीर किया हम। जुमे को खुतबे में जाती हैं क्या आप? फिर बोलती हैं क्या इमाम को फिर से क्लियर कर दीजिए, समझ में नहीं आया? सुनिए, आराम सुनिएगा, ठीक है? लिखना उखना बंद कीजिए। पहले लिख रही थी आप पहले, मरियम पारकर? नहीं सर अच्छा ठीक है। अच्छा तो एक काम कीजिए, तो अब लिखिए आप, ठीक है ना? लिखेंगी, उसके बाद हम समझा दें, चलेगा? yes sir As nitrogen has less electronegativity than oxygen atom, as nitrogen has less electronegativity than oxygen atom, it can easily share electrons with alkyl group and form nitroalkane. पारकर अब आया समझ में? पारकर yes sir अब आ गया समझ में? ठीक। कभी सुन के नहीं समझ में आया तो लिख के समझ में आ जाता है ना? तो see what happens, you have AgON double bond O plus Rx, ठीक है? So in this case nitrogen atom is going to attack like this and it is going to form R. This R will have a bond with NO2. This is nitroalkane. Similarly, if I have, let us suppose like this, Br is here and I treat this with AgNO2, I will get NO2 here. So this is 2-bromo propane. This will be 2-nitropropane. Done everyone? Yes or no? Please tell me. yes sir Yes sir, done. So these were important things. अब यहाँ पे एक टॉपिक आ गया न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile, ठीक है? Please write the definition of nucleophile. An electron-rich species. An electron-rich species that can, that can
donate electrons to form bond. Nucleus loving. For example, OH negative, और क्या हो सकता है NH3, बिकॉज NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. और क्या हो सकता है CH3 नेगेटिव. व्हाट एल्स यू कैन हैव CN नेगेटिव. व्हाट एल्स यू कैन हैव NO2 नेगेटिव. सारे के सारे क्या है न्यूक्लियोफाइल. नाउ राइट अ टर्म दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिससे डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बीडेंट ambident nucleophile. What are ambident nucleophile? It is right the nucleophile in which the nucleophile essentially which has more than one donor sites. More than one donor sites for attacking and bond formation. For attacking and bond formation. For example, आप लोगों ने देखा अभी जैसे CN नेगेटिव था, राइट. बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म दी बॉन्ड. सिमिलरली जैसे आपके पास NO2 था, NO2 नेगेटिव. Here the oxygen atom as well as the nitrogen atom can make the bond. Similarly AgNO2 था. AgNO2 में भी क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ ऑफ देम कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन. बट ध्यान रखिएगा KCN के एग्जांपल लिख दीजिएगा, उतना कोई ध्यान नहीं देता. हमने देखा KCN के एग्जांपल भी सही होते हुए, बट KCN में आपके पास KCN का तो नहीं होगा, मतलब KCN इज और KCN लिख लीजिए चाहे CN नेगेटिव लिख लीजिए, इट इज सेम थिंग. AgCN में लेकिन देयर इज ओनली वन डोनर साइट, दैट इज द नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम के अलावा कोई और डोनर साइट नहीं है. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा बस. लेकिन फिर भी लिख दीजिएगा तो ना मार्क्स में ट्राई करके देख लीजिएगा जरा स्कूल में. AgCN लिख लीजिएगा. एक दूसरा एग्जांपल भी लिख लीजिएगा साथ में, फिर देखिएगा टीचर सही करता है या गलत करता है ना. These are the important reactions जिससे सवाल आते हैं डायरेक्टली कि आपसे. हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने अभी पढ़ा if I have some alkyl halide such as this, when I react this with KCN, क्या प्रोडक्ट मिलता है लिखिएगा. what product are we going to get when we have AgCN? ठीक है. what product are we going to get if we have KNO2? and what product are we going to have if we use AgNO2? ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए इसको. लेट मी नो वंस यू आर डन. बताइए, भेजिए है ना, आंसर भेजिए करके. हो जाएगा ना, हो जाएगा हाँ या ना. आयशा, मरियम एंड रबा.
बताएं, हो जाएगा? आयशा, मरियम, रबा, हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, कीजिए। Sir, Tell me. sir, I don't have enough place to draw it. So can I just write 1, 2, 3 down? हाँ हाँ, आप प्रेजेंट कर लीजिए सही से। Aisha, KCN very good, AGCN very good, KNO2 very good, AGNO2 very good. Passing. बाकी के ये हाँ ठीक है, सही। वेटिंग फॉर अदर्स, पार्कर ने भेजा है। हाँ सही है, ओके। A series of bad decisions, मरियम पार्कर। हाँ yes Mariam, जी you understand a series of bad decisions? नहीं, जी a series of bad decisions नहीं समझ में आया।
A series of bad decisions. एक तो आपने सबसे पहले alkyne halide को नहीं, यहाँ पे आंसर सब सही है, आंसर हम देख ही नहीं रहे। 1 सही है, 2 सही है, यार ठीक है। थर्ड सही है, देखिए तो जरा, थर्ड सही है मरियम पारकर, थर्ड सही है मरियम पारकर। अपने इसमें देखिए ना, नोट्स में देखिए, थर्ड सही है। क्या ख्याल है, सही है गलत है? नहीं सर। गलत है। और रबा कब भेजेंगी आप? हाँ रबा, जल्दी भेजिए। यस सर। हाँ पार्कर कॉल डिस्कनेक्टेड। क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? नहीं आ रहा क्या आपको? सर भेज दो। यस पार्कर, आपने सही कर लिया उसको? नो सर। तो सही लग रहा है आपको या गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? इट्स रॉन्ग सर। या तो आपने फिर लिखा ही गलत होगा, हमने कुछ गलत तो नहीं गलत तो नहीं लिखाया होगा, अदरवाइज बाकी को गलत आता ना। रबा बहुत टाइम लगाया आपने। क्या हुआ पार्कर, कैन प्लीज टेल मी, सही है गलत है? गलत है। सही कर लिया आपने? ONO आता है ना, ONO, AgNO2 में आएगा NO2, ठीक है? यस सर। चलिए अब लिखिए, some more SN reaction of haloalkane. So you have Rx, okay? अरे भाई पूरा हो जाओ। सर कैन आई लीव द क्लास? अरे क्या हो गया भाई, क्यों लीव करना आपको क्लास? सर आई हैव फिजिक्स क्लास राइट नाउ। कब से आपकी फिजिक्स क्लास? सर इट्स फ्रॉम 5:30। अभी लर्निंग का मैसेज आया है। 5:30, और अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:36। अच्छा
ठीक है, छोटा सा पोर्शन है, आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग, बस यही बताना रह गया, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग याद से, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, चलेगा? यस सर, यस सर। ठीक, बाकी लोग देखें। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हमें पहले बना लेने दीजिए, है ना, अच्छे से। ठीक है, प्लीज सी, when you have aqueous NaOH और aqueous KOH, क्या हुआ आपके पास वो aqueous NaOH or KOH, then the halogen atom will be replaced by OH, because NaOH and KOH, both of them are going to dissociate into what? Dissociate into K plus and OH negative, and OH negative is going to act as the nucleophile. When you have H2O, then also you are going to get ROH. Now, third one is important. If you have R that is bonded to C triple bond C, C triple bond C negative, Na positive, C triple bond C negative and Na positive, then this carbon atom is going to attack on R. इसको हम R dash कर लेते हैं. So when this carbon atom attacks on R, you will get R dash C triple bond C and then R. Okay. Next, when it reacts with NH3, then you are going to get R NH2. The other hydrogen atom will be attacked by halogen atom and form HX. Okay. When you have R dash COOAG, silver salt of carboxylic acid, then you will get an ester RCOOR. Next, if you have lithium aluminium hydride, LiAlH4. So if you listen to the word aluminium hydride, hydride is going to be H negative, or H negative, हम bracket में कर ले रहे हैं यहाँ पे H negative. This is going to attack on the alkyl group and form alkene, RH. This is simple alkene. ठीक है, अब बाकी आगे आप कर लीजिएगा KCN, कंप्लीट कर लीजिएगा AgCN, है ना? Then you can write KNO2, और एक और बना लीजिए, this will be for AgNO2. अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सम केसेस, बाकी ये चारों तो इंपॉर्टेंट है ही।